से पहले हमारा एक और सेशन है, फिर वी विल गो फॉर लंच एंड उसके बाद हमारे कुछ और बहुत डायनामिक सेशंस होंगे एंटरप्रेन्योर के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैसे आप अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो फॉर थर्ड सेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमित भागवे, सीनियर एक्सेसिबिलिटी ट्रेनर at BarrierBreak. BarrierBreak is doing such a fantastic job in the field of accessibility. तो एक बार जोरदार तालियां अमित भागवे साहब के लिए। और हम जानेंगे कॉर्पोरेट में अब हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर संजय जैन साहब भी हैं जो नेशनल लॉ स्कूल से, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। सीजनल कैंपेन के आईएएस भी बन गए। अब हम थोड़ी सी कॉर्पोरेट जर्नी करेंगे। कॉर्पोरेट आज के युग में एक इवॉल्विंग फील्ड है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में जा भी रहे हैं। तो इसके बारे में अमित भागवे साहब से बात करेंगे। इंडियन लॉ ऑर्गेनाइजेशन का कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सही तरीके से एम्प्लॉयबल बनाया जाए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाए तो देश की जीडीपी में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो जो जजविंदर जी थे, कंचन मैम, अजय सर, तो दे आर अवर एसेट्स। तो हमें ये प्रूव करना है। अब इस लेवल पर हम आ गए हैं जहां मेन स्ट्रीम ने मानना शुरू कर दिया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसमें कॉर्पोरेट का भी एक बड़ा रोल है। तो अमित साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा सा, हमारे जितने लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है सबको? आ रही है जी, आ रही है। Okay, so before I introduce myself, my question to everybody here. So are we all here for inclusion and accessibility? Yes, sir. That has to be more louder, guys. Yes, yes. Yeah, that's more like it. Okay, so firstly I'll introduce myself. My name is Amit Bagwe and I am the senior accessibility trainer with BarrierBreak and I'm a person with low vision myself. What do I do for BarrierBreak? So I basically handle onboarding and corporate trainings for BarrierBreak with respect to accessibility. So in short, I am a trainer. मेरे बारे में और बताना चाहूँगा मैं, मैंने BSc in Information Technology परस्यू की है। Along with that, I am an MBA from the Wellington Institute of Management, Mumbai. And in terms of my accessibility knowledge, I am certified as certified professional in web accessibility from the International Association of Accessibility Professionals. So that's about me. Talking about my organization, BarrierBreak, of course, I hope you all know who BarrierBreak is. So BarrierBreak is a digital accessibility company and we are in this business since more than 20 years now, and what we do is we support clients with respect to digital accessibility, whether it is testing, remediation, or authoring your websites, or authoring repacks, reports. So we are in this field, guys. सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं जो सबके मन में रहता है, इस कॉर्पोरेट जॉब है सेफ जॉब? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पहले पूछ लिया मुझे कि इज कॉर्पोरेट जॉब अ सेफ जॉब? वेल, आई वुड से इफ यू लुकिंग फॉर सेफ्टी, तो मेरे पास एक कोट है जो मैंने खुद कहीं पढ़ा था एंड आई बिलीव इन दैट कोट। अगर आप इस सेशन के बाद थोड़ी बातें कर ले तो आपको पूरा टाइम मिलेगा लंच में बातें करने का। तो बहुत दूर दूर से स्पीकर हैं, तो बाकी लोगों को आप सुनने दें जिनके ये काम आने वाला है, प्लीज। जी तो मैं एक कोट, आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग हियर
losers seek security and winners look for opportunity. So I think ये आपका जवाब होगा. Yes. बिल्कुल. So अगर आपको कॉर्पोरेट में आना है, देखिए रिस्क तो होता है, यू नो. जॉब हमारे लिए कितनी सिक्योर है ये डिपेंड करता है हम अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आर वी upscaling ourselves with every passing day or not? If you want to work in the corporate environment, अगर आपको you know एक corporate job चाहिए तो उसके लिए आपको हर दिन अपने आप को बेटर करना होगा, हर दिन कुछ नया सीखना होगा, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हमें भी उस दिशा में आगे बढ़ना होगा. एंड ऑफ कोर्स इफ यू डू दैट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई सेफ्टी नहीं है. अगर आप अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग बेटर देन अदर्स, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई रिस्क है या कोई सेफ्टी के बारे में डरने की जरूरत है. तो कॉर्पोरेट में अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चला है कि ज़्यादातर लोग एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बन रहे हैं. हम HR मैनेजर बहुत कम देख रहे हैं, हम और जॉब्स पे कम देख रहे हैं. तो सिर्फ ज़्यादातर जैसे एक पहले टैग दिया जाता था कि म्यूज़िक से एसोसिएटेड है पर्सन विद डिसेबिलिटी, खासतौर पे ब्लाइंड. फिर एक दौर आया जिसमें बैंकिंग के साथ एसोसिएट किया गया. अब तीसरा है एक्सेसिबिलिटी टेस्टर. तो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और डिसेबल के लिए? हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल ये दौर हो गया है कि अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को कॉर्पोरेट जॉब में आना है तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर एक कॉमन मिथ हो गया है कि बस ये हम कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू गिव मोर पर्सपेक्टिव ऑन दिस. सो फर्स्ट थिंग, जैसे आपने कहा HR. सो इफ यू आर somebody who is passionate about accessibility and do something in the field of HR, there are quite a few roles. If you want to be in the field of accessibility, then of course you can be a DEI specialist, so you can basically be a inclusion specialist. You can take care of the company matters when it respects with respect to digital accessibility and inclusion. So that is one thing which you can do. In terms of management, not just being an accessibility tester, but we need to manage those projects with respect to accessibility. So हमें project managers की भी ज़रूरत होती है. अगर आपके पास management degree है, if you have done something in management, if you are pursuing management, then project management can be a very important aspect when it comes to if you are looking for accessibility and management. But other than that, there are various things with management what all you can do. You can do finance, you can do banking. All these different types of roles are there in management. So that is about management. Talking about accessibility, so not just a tester, but you can be a full-time developer. Who is stopping you from doing that? You can learn coding, you can develop your skills in coding, you can do front end, back end. Obviously technology is there today. हम उस technology को use करके अपने skills को scale करके we can basically do coding. And you can be a consultant. You can be an accessibility consultant for various firms. If you have that knowledge, if you are passionate about accessibility, if you have done those certifications and you have that experience, you can work as a consultant as well. So testing is just not one thing. There are various aspects जो हम देख सकते हैं. बिल्कुल. तो दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे. एक, कॉर्पोरेट में जाने के लिए मेरी क्या क्वालिफिकेशन और स्किल सेट होना चाहिए? और एक बहुत कहा जाता है कि कॉर्पोरेट में पैसा बहुत है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल. तो क्या कॉर्पोरेट की सभी जॉब्स में पैसा है? ओके, सो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले एड्रेस करूंगा कि हमें क्या स्किल सेट होना चाहिए. सो आई विल टेक अ लीव फ्रॉम कंचन जी, जो आपने मॉर्निंग में कहा था कि you have to be, if you are a person who is blind, if you are a person who is low vision, आपको ब्रेल और आपको any kind of text आपको नॉलेज होना चाहिए. Generally what we see, people with disabilities जो हमें ज्वाइन करते हैं, first talk about people with visual impairment. हम ये देखते हैं कि yes they are good in speaking, their verbal communication is very good in English, but when we see as written communication, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है. No proper punctuation marks, spelling mistakes, no proper sentence formation, and that is
that will only be taken care when you know the script. For example, if I am reading, I'm a person who is low vision, so I would look at the font, I would read those words, I would read that Latin text, and I know कि मेरी spelling कैसे बन रही है. Listening to screen reader, of course, is good, but learning your spellings is important. Learning your grammar, your punctuation, your spaces is very very important. तो एक basic skill है जो आपको करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट जैसे आपका टेक्स्ट है आप उसको आप पढ़ सकते हैं, या तो यू कैन बेसिकली use braille and you can learn that is very very important. Second thing, if you want to be in a corporate role, then you have a competition with yourself and you have a competition with the world, not just people with disabilities. You have to be on power with somebody who is non-disabled. तो आपको उस लेवल का आउटपुट देना पड़ेगा. उसके लिए आप में डेडिकेशन होनी चाहिए. It's not कि मैं 9 o'clock को if I'm coming into an office and I'm leaving at 6 o'clock. No, there are times where we have to work on projects. Now, in fact, I'll tell you, last night I was taking a client call at 2 a.m. in the morning, and that is something which is which you should adapt. कि हमें ये करना पड़ेगा. You should be open for it, and it has its own fun, it has its own benefit, and it has its own value. अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, you get to learn new things and you get to meet people. So that is one thing. And when you talk about finances, so when it comes to a corporate role, it depends on how capable you are or how you are going forward with your with your footing. So that is something which you have to work on. Yes, corporate has money, but it's not just like that you join a firm and you get the money. You have to earn it. You have to put in hard work. The more hard work you put, the more efforts you will put, definitely you will earn more. तो बहुत सारे लोग मुझे जो कॉर्पोरेट में हैं वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट में जो पैकेजेस अच्छे हैं, लोग डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब में, तो दोनों में फर्क है. तो कैन यू स्पेसिफाई प्राइवेट जॉब्स और कॉर्पोरेट जॉब्स में? Okay, so depending upon what kind of role, मतलब किस तरह का आप रोल करना चाहते हैं वो important है. See, there are various roles which are like day in day out roles, like for example, if you are thinking that a data entry kind of a thing, so that is also a private job where you are going and doing that data entry thing. Like for example, you are working for a call center, you are working for a back end thing, and you are doing that day in and day out work. So that is something which obviously will have your growth, but at a very slow level. I mean, depending upon your years of experience, you will get the growth. But talking about a role, especially in the field of accessibility, like if you can start as a tester, then of course you can develop your role as a SME, then you can become a consultant, and you can basically be someone who can be looked upon as a role model in accessibility. So that is something where you can do better as a full scale role in accessibility, in digital accessibility. Other than that, अगर आपको मैनेजरियल रोल में आना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ मैनेजरियल रोल, बट देन अगेन यू हैव टू गेट ऑन विद द थिंग्स, और उसके बाद ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. यू वांट टू जस्ट ग्रो sequentially, or you want that expansion, you want that learning. So that depends on what kind of role you want to choose and you want to decide. कॉर्पोरेट में किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को दूर रहना चाहिए? Okay, that's a very interesting question. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा है. कॉर्पोरेट में किसको जाना चाहिए? जिन्हें लाइफ में कुछ करना है, they want to meet people. हमें लोगों से मिलना है, मुझे हार्ड वर्क करना है. There was one thing, I want to excel in my career. मुझे recognition चाहिए. मुझे, I want to do something which is not done by everybody. मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ. मैं हर दिन कुछ नया सीखने के लिए रेडी हूँ. My communication is good. I am not shy of communicating. I am an extrovert speaker. I want to go and talk to people. I want to do I want to travel.
Okay, I don't want a desk job. I want to travel. I want to learn. I want to go to places. I want to speak. Then of course corporate is for you. Corporate किन के लिए नहीं है? मुझे 9 to 5 काम करना है. मुझे I mean I don't want to learn new things. और मुझे कोई जॉब मिल जाए बस. That's it. अगर ये आपकी थिंकिंग है तो please don't come to a corporate role. Security, yes, that's a very important thing. Security. अगर मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बस आना है, मेरा दिन भरना है, मुझे जाना है, तो भाई मत आओ कॉर्पोरेट में, प्लीज डोंट डू. अच्छा, एक चीज है कि कॉर्पोरेट हम करते हैं, और जब भी किसी से पूछे कि ये कॉर्पोरेट वाली जॉब्स निकलती कहाँ पे है डिसेबल्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए, तो स्टैंडर्ड आंसर आता है लिंक्डइन देखते रहिए आप. और एक टाइम पे मतलब जो लिंक्डइन था वो वहाँ होता भी था, तो डायनामिक्स चेंज होती है. एनीवे दिस सेशन इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लिंक्डइन. तो कौन सा फॉर्मेट है, कहाँ पे हम प्रॉपरली हमें जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के लिए जॉब कॉर्पोरेट में आई है? How to search basically? So when it comes to roles for people in the corporate world, तो आपको first of all disability, yes, it is an important aspect. आपको disability को consider करना चाहिए, but then it is not that कि मुझे disability specific role देखना है. You have to look roles as per your skill set. If I have done, let's say, a bachelor's in IT, then I will look for an IT role, and then of course when I go to the interview table, when I talk to the organizations, when I talk to the people there, that time I have to get those things sorted with respect to inclusion, with respect to how accommodation can be done. Now when you talk about corporate world, accommodation है आज, how you can make your workplace inclusive. The corporates are working on it. The thing is that it's not that you have to stick to a LinkedIn post, or you have to stick to some NGOs who are helping you to gain a corporate job. No, you have to reach out to these organizations. You have to be voicing yourself. आपको खुद की आवाज खुद बनना है. जो भी आपको रोल लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, उसके लिए आपको खुद कांटेक्ट करना है. You have to sit on the negotiation table with the HR. Convince them that you can do it and get that role. जी, तो सर्च हम मतलब अप टू डेट रहना है सोशल मीडिया पेज और उनकी साइट्स पे. बिल्कुल, you have to look at different the job portals of the companies which you are looking for. For example, if I want to be get into IT, so I would look for organizations or IT companies. I would always look at their job portals, what they are posting. Of course, their LinkedIn channels, their social media, their online portals from where they hire people. Those are the things which I have to, जो मुझे हर दिन देखना है, मुझे observe करना है. And if I have some skill set which is not to that level, then I have to gain that skill set. जी, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर कन्वर्सेशन पे लौट के आते हैं. क्वेश्चन है किसी का? जी, जी. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. मेरा नाम अंकित जिंदल है. मैं बैंगलोर से हूँ और मैं मार्केटिंग डायरेक्टर एंटिटी डेटा में काम कर रहा हूँ. लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. आई थिंक जो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन में बहुत रेलेवेंट है. मेरे को खाली एक ऑब्जर्वेशन देना है फॉर अ डिसेबिलिटी सेक्टर. आई थिंक जो बातें यहाँ पे करी गई हैं फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ग्रेट, बट जो मैं देख रहा हूँ एक AI जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा भी है, बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. खतरा क्यों? क्योंकि बहुत सारे रोल्स जो AI हम जो कर रहे हैं डिसेबिलिटी में एंट्री लेवल पे, वो धीरे धीरे शायद कम होते जाएंगे AI के पेनिट्रेशन से. अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, एजेंटिक AI से, और ये इसमें ना हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है क्योंकि डिसेबल्ड हो कि नॉन डिसेबल्ड हो, दोनों अभी ग्राउंड जीरो पे ही है. इट्स अ न्यूअर फील्ड, इवोल्यूशनरी फील्ड, और इसका इंटरसेक्शनैलिटी हर फील्ड के साथ है. मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, आप कहीं पे भी ले लीजिए, इसका इंटरसेक्शनैलिटी रहेगी. सो मेरी गाइडेंस या एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है ऑडियंस के साथ, क्या जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कि AI को ज़रा अपने स्किल्स
थोड़ा दुरुस्त करिए, उसके साथ अपडेटेड रहिए और उसकी इंटरसेक्शनैलिटी अपने एरिया के साथ भी एक्सप्लोर करिए। थैंक यू सर, वेल सेड एंड वेलकम टू आवर कन्वेंशन। जी अमित जी, आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। So Ankit, you had a very good point that AI can take away your job, but AI can give you opportunities. Again, my quote which I said that it applies, rightly to AI. Now when it comes to AI, देखिए AI आज अगर एक चैलेंज है तो वो सिर्फ डिसेबल्ड के लिए नहीं है, वो हर यूजर के लिए है। ओके, being a person who is doing a job which can be taken away by AI is a problem of not just the disabled but people who are non-disabled as well. So everybody of us have to take AI as as a learning curve. AI is not your just assistant. AI, as you said, machine learning, artificial intelligence, generative AI, all these are different things which you have to put in your effort and gain that knowledge. आपको AI छोड़िए नहीं चल, आप जा नहीं सकते. You have to basically learn with the trend and you have to follow AI. And AI is gonna stay. It is not going anywhere. We have to stay with it. We have to coexist with it. Next. Hello sir, good afternoon. I am Omkar once again. Sir, मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस. फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी आपने और अंकित सर ने AI इमरजेंस के बारे में बताया कि हाउ AI इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी और एक खतरा भी हमारे लिए नॉट ओनली फॉर अस, साइटेड पीपल के लिए भी बनते जा रहा है. तो हम मतलब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम एज अ करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन है कि जो पर्सन या फिर जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आता है, ओके, या फिर जिसने बैचलर्स मास्टर्स कर रखा है, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या स्कोप है? So, firstly, the one question which you are talking about, prompt engineering, how to basically get into prompt engineering, how to learn prompt engineering. So you can look at various courses. There are, if you look at online coursing platforms like Coursera is there, or there are various online platforms which basically provide you courses on artificial intelligence, machine learning, prompt engineering. So you have to make sure that you select the right kind of course depending upon what is your interest. So you will have to do that. Okay, so you have to upskill your knowledge. And it is not that कि आप course कर लोगे तो it is that you have to apply that knowledge. You have to use those skills and gain something which you can do, which you have mastered yourself in. So it's not just taking a course of AI ML or taking a course of prompt engineering and I am good to go. No, you have to get that applied knowledge as well. So वो आपको करना पड़ेगा. And for people who are from the who have done their masters and bachelors from arts or such fields, yes, you also can learn AI. When you start with AI, there are various courses which can be learned, which can be started, and without basic knowledge or with zero knowledge of coding. And at the end, learning coding or learning any kind of code or development is not just depending upon your graduation with respect to human arts and all. We have people who have done their graduation from arts, but they have learned coding. They are doing testing roles for us. They are doing development role for us. So as a disabled, if you want to learn coding, there are so many platforms which are available which can help you learn coding in an accessible way. So you can do that. That is one thing. If you want to look at other opportunities as a person with disability with arts and other backgrounds in the corporate role, yes, you do have managerial roles. You can pursue an MBA and you can go for that. Or there are various other things which you can do. Is you can be like for example, if you want to do corporate speaking, that also you can do. So there are various roles which you can do. And arts or any kind of stream is not a limitation. Next.
intern. So I just want to know how can I upskill my knowledge in this field, or because I am a student from arts background and I did my bachelor's and master's. So how can I upskill my knowledge in this field? And also you said that we can also go in corporate speaking. So what is that? If you can clarify that. Yeah. Okay, great. So, what is the current role which you are pursuing as an intern? What is the role which you are currently taking care of? So actually I am in the field of procurement and allotment of the slots. Basically, it is a work where I have to procure the slots and taking interviews and procuring slots for the interviews. So this is the role in HR. Okay, so you basically align interviews for the senior HRs and management to take care of the candidates, right? So you align the candidates for the organization. Yeah, with the panel I have to procure the slots, and with the panel I have to set I have to mark the calendars, I have to set the date for the interview. So what is that you want to be? Like, what do you want to do in terms of HR? Now, HR is not just a very, basic thing. HR, if you think about HR, as just, hiring people, maintaining your workforce, no. HR today, CSR activities, that is something which HR can do. You can, marketing with respect to your company policies and all, those things are also available for HR. If you want to specifically go into, rewards management, you can do that for your employees. So employee reward management, if you can basically go into, you can become a corporate trainer if you want to do that. So there are various things with respect. So if you basically want to join the HR team, the training, the learning and development team, you can do that. अपस्किल कैसे करना है वो कह रही है. So basically I am in the hiring team. So in that field how can I upskill myself? I'll tell you here. Danish. Mike. Okay, I'm Kanchan, and the best thing you can do for yourself is start studying law, because in HR, law is very essential. Lots of laws are required for HR field. So, agar you want to go to very small things like slotting right now, it's a very manual work. Okay, thoda brain application hai, but agar advance karna hai HR mein, law is a very good MBA ya law karna aage, please. Study a little ahead so you go far ahead. Hello sir, myself Rajni Sharma. Basically sir, I have two questions. जैसा कि सर आपने बताया कि कोडिंग के लिए जो एक्सेसिबल कोर्सेज हैं, तो मैं कुछ एक दो कोर्सेज आप प्लीज़ बताइए जो कि ज़ीरो कोडिंग नॉलेज जिन लोगों को है वो कर सकते हैं. और दूसरा ये सर, मेरा जो जॉब है एक्चुअली ट्रांसलेशन का जॉब है, तो मैं उसमें कुछ आगे और लर्न करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ एक्सेसिबल कोर्सेज हैं अवेलेबल. So what kind of translation? Can you explain? यस सर, एक्चुअली मैं हिंदी ऑफिसर हूँ. हमारा काम एक्चुअली हिंदी को प्रमोट करना है, तो हम लोग इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं. हिंदी टू इंग्लिश भी अगर ज़रूरत होती है तो हम करते हैं. तो ये चीज़ मैं मतलब ये तो उसमें मेरी एफिशिएंसी है, ये मैं कर लेती हूँ. बट मैं और भी लैंग्वेजेस सीखना चाहती हूँ, लाइक जर्मन, फ्रेंच, या तो ऐसा कोई एक्सेसिबल कोर्स है अवेलेबल जो मैं कर सकती हूँ, या इस फील्ड में और कोई मतलब करियर अपॉर्चुनिटी अगर है. So if you want to start your coding, okay, आपको basic अगर coding सीखनी है, तो the very simplest and the very easy website is what I can recommend is w3schools.com. You can learn HTML, you can learn CSS, you can learn JavaScript, and various other things are there. You can learn those things with respect to coding and knowledge. And if you और अगर आपको accessibility सीखनी है, तो BarrierBreak का अपना प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं एस लर्निंग. ओके, एस लर्निंग इज अ प्लेटफॉर्म बाय BarrierBreak, एंड वी हैव डन series with Danish on Radio Udaan. So we have those episodes. You can go back and you can know more about ACE Learning. You can create a free account on ACE Learning and can access the free courses with respect to accessibility. So basic courses on accessibility are available. Things like even technical things like, for example, heading structure, or when you want to learn about keyboard navigation, तो इन सब के ऊपर भी कोर्सेज एस लर्निंग पे आपको मिल जाएंगे और आप एस लर्निंग को
join कर सकते हैं. You can just create an account and start learning right now from the day one as well. If you want to learn about basic understanding of accessibility, you can start from there. And if you want to learn code, w3schools.com है. If you want to take accessibility as a career, then of course you should refer to W3C, the World Wide Web Consortium W3C website. You can start learning about basics of accessibility from there as well. So ये तो हो गया आपको अगर कोडिंग में या फिर एक्सेसिबिलिटी में कुछ लर्न करना है तो उसके लिए अवेलेबल. एंड ट्रांसलेशन के लिए you can use technology. Okay, of course you have AI today which can do much easier things with transcription and translation, which can be done at a very fast rate, so your time can be used. So you have to learn these tools, that how you can basically manage your translation. And of course there are various courses online to learn about different languages, and languages के लिए तो आप कोई भी courses कर सकते हैं. You can go to like an academy, you can go to Byju's, any courses you can go and you can learn about language. Okay, thank you, sir. Next. Any other question? Last question ले रहे हैं. Hi, I'm Balaji. I'm a lead software engineer. Hello. Sorry, can you be a bit louder, Balaji? Yes. Hi, I'm Balaji. I'm a lead software engineer in one of the MNC. I'm into JavaScript and Node.js backend, like AWS, DevOps kind of thing. And I want to shift my career into ML and NLP, like AML kind of thing. There I see like a lot of pictures kind of thing, like explaining like how the neural network is. How much like I just want to have a contact in AML so that I can get into. Also, how much how many challenges? What are the challenges if I go to like learning and these like business intelligence tools? All those things. I just want to. So you want to get into AI, ML and business intelligence tools is what I can reckon. Not exactly BI tools. BI tools I face a lot of challenges because there are across all those things. Exactly. And I want to get into AML. What are the challenges? What are the opportunities? Are there any people in that? So if you want to learn machine learning and artificial intelligence, yes. When it comes to image-based things, still, I mean, that is not 100% accessible. Generating, identifying images, still we are not up to that level where you can, get into image generation or, identifying images. But when it comes to things like code or, generating code or generating scripts or generating, content, that is something which you can start off with, and keep updated with the different types of courses which are available. And of course, see, we are just in the second or third generation of AI. We are not actually completely induced into AI yet. So still, it is a start, and definitely there will be courses which will come in and which will help you to learn. कोई एक और? सर जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस रिगार्डिंग आप कुछ अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं? Okay, music and corporate. Okay, that's an interesting thing. What technology have you used when it comes to music? Sir, actually I don't know about the music and technology. Okay, I'll tell you. Because it is not my field, but my friends and family members are doing this. That's why I'm asking. So you want to basically go into a role with respect to music and corporate. Is that something like? No sir, actually I want to know about music career. not in म्यूजिक के लिए corporate. हमारे साथ पुनीत जी और संजीव जी हैं, तो वो बताएंगे अभी आपको. अभी ये कॉर्पोरेट वाला है, तो विद दैट नोट आप कुछ फाइनल समाप्त करना चाहते हैं? Just want to add that there are various applications with, अगर tech का question है तो obviously I answer that. Yeah. So आपने अगर
If you talk about Mac or the Apple family of devices, there is a software called as GarageBand, which can be used to create music in an accessible way. That is what you can try. That is what I was knowing, so I could share that. One thing I want to announce here that BarrierBreak is having a digital accessibility conference which is called as Inclusive